So this was a very short glimpse about him. Now this photograph is very special to us. You know why? Because this photograph shows the first ever music percussion concert in the world between Indian drums and the Western drums. And the man on the right who's sitting on the drums, he is known as the god of drums. His name is Papa Joe Jones. So he was given the title Papa because nobody could beat him in the drums. He was the best. So the US government then decided, okay, let us bring the best drummer from the US and best drummer from India and let them perform. And this concert went for 30 minutes only. It was for a TV then. It was directed on the TV. And this is now a collector's item. And it can be seen only in 2 museums in the world. One is the Library of Congress in the US. And the second is the Tadha Museum of Pranshu Chatur Lal in Delhi. Okay. So this is a very special film that was directed then. And this was the first ever fusion concert of the world. Okay. Who is that man in the middle in the first photograph? Can somebody tell me? In the middle. Our first Prime Minister of India? Yes! He's Pandit Jawaharlal Nehru. And on the left is Pandit Chatur Lal, my grandfather. And on the right is another very, very famous sitar player whose name was Ustad Vilayat Khan. So I'll tell you a story. In 1962, Queen Elizabeth came to India. And in 1960, my grandfather went to London and he was performing for a very big concert. Okay. So Queen Elizabeth was invited, but she couldn't come because she wasn't well. So when she came to India in 62, she told our Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, can you please make me meet Pandit Chatur Lal? He has made a huge name in my country and I want to meet him. So a special concert and a meeting was kept in Rashtrapati Bhavan in 1962. And that on the right picture is Queen Elizabeth and Duke of Edinburgh, her husband, meeting my grandfather. So this is again very, very special moment and I thought I should share with you. Okay, so the first picture on the right, first is with tablas, obviously my grandfather Pandit Chatur Lal. Then the right on the right is where our former President of India, K.R. Narayanan. And he was the first one to invite my grandfather in Australia to perform for the first time Indian classical music in 1960. And my father was very good. My grandfather was very good cook. So he told me one day once he came to our place that, you know, my wife learned making rotis, chapatis from your grandfather. So he didn't have one talent, but he was also a very good cook. Okay, now the down photograph. Have you heard of Lata Mangeshkar? What does she do? Yes. So they gave music for a lot of Bollywood films during that time. And this photograph she gifted me when I went to meet her. That's Lata Mangeshkar sitting in the mid. On the left, very, very famous sarod player, Ustad Ali Akbar Khan. Then up on that, on the right, top right is my grandfather, and then is Pandit Ravi Shankar. So this is another very special picture. This is a beautiful picture. This was the last concert they played together before my grandfather expired. And this concert had, you know how many people? 25,000 people. Can you imagine? So I thought of sharing with you. Okay. So that's it. And now, because he was very famous, so we all decided that, you know, we have to keep him immortal. So we made a museum, and the road coming to our museum is known as Pandit Chatur Lal Road, which is being honored by the government of India. So can we please have the full slide? Yeah, so that's the road inauguration. Very famous Kathak legend Pandit Birju Maharaj, who has taught Kathak to Deepika Padukone, Madhuri Dixit. He came to inaugurate that, and then we have the museum glimpse also. That's the museum that I'm talking about. Okay. Okay. Next slide.
and this legacy. So I also play drums, but not as professional as my brother, but a bit of interest. And my brother, his name is Pranshu Chatur Lal, and he takes the legacy ahead. That's him. Okay. Just a few glimpses. That's Pandit Ravi Shankar ji. He just performed with our Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. So that's Honorable Modi. Then we have Ustad Zakir Hussain. We have Shah Rukh Khan. So he performed a lot of concerts for Shah Rukh Khan. And whenever we go to Bombay, he always invites us to his place. And we eat cookies and some coffee with him. And then it is Ustad Amjad Ali Khan. So these are all the few small pictures that I just thought of sharing with you. You like Shah Rukh Khan? Okay, so Shah Rukh Khan loves Pranshu, and I hope you all will love Pranshu. Okay. So, Pranshu. You know how old he was when he started his percussion journey? 3 years old. He was 3 years old only and used to play games not like hide and seek or going for a horse riding. Our games used to be in tabla bowls. We used to speak like that. So this used to be, hey, how are you? He said, I'm fine. How about you? Did you go to school today? So this is how we used to talk to him. Okay. Now, he performed first in the US when he was 7 years old. And he was very nervous. But as soon as he went on the stage, and all the audience gave him a great applause because he was just 7 years old, his motivation was here. And he performed amazingly well. And since then, he was invited all across the world to perform. He performed with a lot of Bollywood singers, Roop Kumar Rathore, Anup Jalota. Then he did concerts with Zakir Hussain, like n number of artists, Pandit Birju Maharaj, n number of artists all across, and he's done a lot of foreign collaborations, yes. Who won both of them? There was a tie. Because they were so good. The judges couldn't decide. People couldn't decide. The audience couldn't decide. They said that two of them are so beautifully playing. How can we say who's better? Okay. We know, we all love Messi and Orlando. Okay. Okay, so are you excited to see Pranshu? Yes, are you sure? Okay, so being awarded a lot of times and with a lot of musicians he's been performing, let's invite on stage Pranshu Chatur Lal. And on Sarangi, he will be accompanied by Shri Arish Faisal, who plays amazing Sarangi, okay? So you have to hear it nicely. He'll be giving him rhythms like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1. Coming back to the sum. So he'll tell you more about it. But Arish is going to give him beats in a melody, okay? And now we invite on stage with all our hands together, Pranshu Chatur Lal.
It's working. Namaskar, everyone. Thank you so much for having me. First of all, I would like to thank Principal Ma'am and Shama sir for having me here. It's a pleasure to be performing and talking about music in front of you. Thank you so much, Shruti Didi, for such a beautiful introduction. So I don't have to speak much about myself now. So I'll be talking about music first. So, what is sound? हम लोग sound सुनते हैं तो आपको पता है सबसे पहला साउंड कब क्रिएट हुआ था, क्या हुआ था, साउंड का क्या स्टोरी है, हिस्ट्री है? एनीबॉडी नो? तो इसको नाद बोलते हैं, नाद, NAAD, नाद। और ये पता है कैसे हुआ था? त्रिदेव है ना, 3 देव हैं, कौन कौन से हैं? ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं और फिर शिवा जी हैं, है ना? तो जो महादेव जो थे हमारे, उन्होंने जब डमरू बजाया था, डिग 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 बजता ना डमरू, तब नाद हुआ था। तो नाद की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई थी और हमारा शास्त्रीय संगीत का तब जन्म हुआ था। पहले के जमाने में आई एम गोना कम ऑन कि तबला कैसे आया पिक्चर में। सो वेरी क्विकली बिकॉज आई वांट टू परफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू, सो आई एम गोना गिव यू अ शॉर्ट स्टोरी कि कैसे तबला आया, स्टोरी मतलब हमारे क्लासिकल म्यूजिक के अंदर। तो सदियों से जो हमारा हिंदुस्तान में जो संगीत होता आ रहा था वो था ध्रुपद संगीत। ध्रुपद संगीत जो सब लोग हमारे गॉड्स बजाते थे, कथा वाचन होते थे, सब कथाकारी करते थे, है ना? कृष्ण जी फ्लूट बजाते थे, डांस करते थे, कथक करते थे। फिर धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस आते गए। तो ध्रुपद गायकी से हम ख्याल गायकी में आए। तो जो ध्रुपद म्यूजिक था वो बहुत हैवी म्यूजिक था, उसके लिए तबला पॉसिबल नहीं था क्योंकि इसमें बहुत स्वीट साउंड है। इट डजंट हैव ऑल दैट हेवी स्टफ, दैट बोल्ड साउंड। तो तब पखावज होता था। आपने देखा होगा कि लॉर्ड गणेश कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? पखावज। कभी आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है ना? तो कई लोग कहते हैं कि पखावज को काट के तबला बनाया गया था, विच इज नॉट ट्रू। सो द स्टोरी ऑफ तबला इज कि जब ख्याल गायकी शुरू हुई थी तो उसके साथ जब पखावज बजा तो इट डिडंट साउंड दैट गुड, क्योंकि ख्याल गायकी के अंदर एक डिफरेंट तरह का वोकल पिच का इस्तेमाल होता था। उसके लिए एक स्पेशल कस्टमाइज्ड ड्रम बनाया गया विच इज द तबला, विच जिसकी अपनी एक लैंग्वेज है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, दीदी ने बताया वी हैड सम गेम्स, गिरगिड़ा हाउ आर यू, काता के दिन जी मैं ठीक हूँ, ऐसे सब हम लोग बातें करते थे। तो ये इसकी लैंग्वेज है। तो आप देख रहे हैं कि बाकी सब भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मेरे पास, ये भी मेरी फैमिली है। इसके अंदर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको बोलते हैं दरबुका, इट कम्स फ्रॉम टर्की। आपने बेली डांस सुना होगा, उसके साथ ये बजता है। ड्रम्स तो सभी को पता है। थोड़ा मैं साथ साथ साउंड चेक भी कर रहा हूँ क्योंकि हो नहीं पाया था, सो डोंट माइंड। तो जैसा कि आपको अभी दीदी ने बताया कि वर्ल्ड का जो फर्स्ट फ्यूजन हुआ था वो मेरे दादाजी ने और पापा जॉर्ज जॉन्स ने किया था, राइट? तो उसको जब मैंने देखा अपने बचपने में, तब मैंने तभी सोच लिया था कि जब मैं तबला थोड़ा बहुत समझने लग जाऊंगा तो मैं कुछ एक ऐसा तबला हाइब्रिड सेटअप बनाऊंगा जिसमें तबला और ड्रम्स दोनों साथ होंगे। क्योंकि मैंने देखा, इतने कंट्रीज में गया हूँ, इतने सब मैंने डिफरेंट कोलैबोरेशंस करे हैं। फाइनली पता है क्या कमाल की बात, जो 7 नोट्स होते हैं ना हमारे, कौन से 7 नोट्स हैं? ऐसे तो नहीं है, उसका कुछ नहीं बोलना नहीं है, गा के सुनाना पड़ेगा। तो हम जरा भैया को बोलेंगे सारंगी पे जरा हमको जरा सरगम सुनाएंगे और जरा हम साथ में गाते हैं इनके। आइए सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा।
अब एक बारी आप गाएंगे, मैं नहीं गाऊंगा। एक बार जरा आप गाइए सारंगी के साथ, आइए। सा रे गा मा पा धा नी सा। फैंटास्टिक। फैंटास्टिक, क्या बात है, तालियां बजाइए अपने लिए, शाबाश। फैंटास्टिक, लवली। तो अब ये हो गए स्वर, अब आती है ताल की बात। तो जब मैंने आपको बताया तबले के बारे में, तो मैं क्विक इंट्रोडक्शन देता हूं। इसको लोग कहते हैं क्वीन ऑफ ड्रम्स, लेकिन मैं इसे कपल ड्रम बोलता हूं। पता है क्यों? एक तो दो हैं, और देखिए इसकी साउंड ऑन है भी, हाँ देखिए जरा साउंड में फर्क देखिएगा। थोड़ा मैं पाउडर लगा लूं, हाथ चिपकता है तो इसलिए हम पाउडर लगाते हैं जी। तो देखिएगा जरा साउंड का फर्क। थोड़ा वॉल्यूम दीजिए ज्यादा, थोड़ा और अप करिए, अप थोड़ा सा नीचे। ये देखिए, ये थोड़ी पतली आवाज है ना, तो ये फीमेल हो गई, और ये मेल है ना। तो जब ये लोग साथ में बात करते हैं तो ये कह रही हैं, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, है ना। तो ये इनकी अपनी लैंग्वेज है। तो देखिए इसकी लैंग्वेज कैसे है, मैं ज्यादा वक्त नहीं चाहता, फटाफट से बताता हूं। जो मैं बोलूंगा वैसे ही साउंड में निकालने की कोशिश करूंगा। कुछ गलती हो जाए तो जरा माफ कर दीजिएगा प्लीज, हाँ, डांटिएगा नहीं। डांट देंगे ये मैं सुन लूंगा। नहीं डांटेंगे ना, चलिए वेरी गुड। देखिए अब पहले राइट हैंड ड्रम, इसको क्या बोलते हैं? दाया। क्या बोलते हैं? फैंटास्टिक। तो देखिए इसके सिलेबल्स क्या हैं, जैसे आपका ABCD होता है ना, वैसे ही है। ता, ती, तीट, त्रक, तिन, तिन्ना। देखा कितना सिमिलर साउंड आ रहा है। अभी लेफ्ट हैंड पे आते हैं। कट, घे, घे 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 घे, है ना ऐसे। अब इसको साथ में देखिए, इसमें कैसे साथ में वर्ड्स बनते हैं। धा, थोड़ा सा बेस दीजिए दादा इसमें। धातीट, तिरकिट तकता, धधकट 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 धा, धा, घेंत धा, घेंत धा, तिना के नता, ताके तिना के नता, धा। देखा? तो ऐसे इसके वर्ड्स डेवलप होते हैं। अच्छा, जैसे आपका टाइम टेबल आप फॉलो करते हैं, सुबह आते हैं, है ना, फिर ब्रेक होता है, फिर घर जाते हैं, सो जाते हैं, घर पे खाना वाना खा के, काम वाम करके, होमवर्क करके सो जाते हैं। एक ग्राफ होता है ना पूरा दिन का, ऐसे ही हमारे तबला सोलो का भी ग्राफ होता है। बेटा प्लीज सुनिए, फिर आपको एक बॉल की गेम भी खेलेंगे आपके साथ, ठीक है? वेरी गुड। तो तबले का ग्राफ में क्या है, पहले ये ट्रेडिशनल तबला सोलो है, मैं साथ में थोड़ा ड्रमिंग भी करूंगा, और पहले आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल तबला सोलो सुनाऊंगा, उसका ग्राफ समझा रहा हूं। पहले कॉम्पोजिशन को बोलते हैं पेशकार, जो थोड़ा सा स्लो होता है, धीरे धीरे बिल्डअप होता है, डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स में आता है। उसके बाद कायदा आता है, ये डिफरेंट कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर कटिंग्स होते हैं, एंड फिर आता है रेला, जिसमें फ्लोई बोल्स होते हैं। सो पेशकार हो गया त्रिधिन धाग धाधिन्ना टाइप, और कायदा क्या हुआ, जो कहा था दीदी ने कहा था ना अभी, दातिट दातिट दादा तिट धागे तिन्ना के ना, वो तिट का कायदा है, ये कायदा होता है। और रेला क्या होता है, जो एकदम फ्लो करेगा रिवर की तरह। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं रेला। थैंक यू। तो ये मैं एक शॉर्ट आपको ग्लिम्स देता हूं अपने ट्रेडिशनल तबला सोलो की। उससे पहले लेकिन हम क्या करेंगे, वो किस साइकिल में है, 16 बीट साइकिल में है, उसको हम बोलते हैं तीन ताल। क्या बोलते हैं? तीन ताल। तो पहले मैं आपको वो काउंट करना सिखाऊंगा, तो आप शायद थोड़ा बेटर समझ पाएंगे। ओके, सो लेट्स ट्राई टू काउंट 16, पर कैसे करना है वो मैं पहले आपको दिखाऊंगा, फिर ट्राई करना। ओके, 16 बीट्स हैं, फोर डिविजन्स हैं, 4 बीट्स की, ठीक है। 4 पार्ट्स हैं 4 बीट्स के। प्लीज सोइए मत, घर जाके सोना प्लीज। हाँ जी, सुनिए। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके गाइस, कॉन्सेंट्रेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। ठीक है, तो ये 16 का एक साइकिल होता है। ये साइकिल चलता रहेगा, जैसे क्लॉक होता है ना, वैसे वो उसमें 12 का साइकिल चल रहा है, इसमें 16 का साइकिल है। ठीक है, और वो 16 साइकिल का मेरे को ट्यून देंगे भैया। ओके, तो अभी आप जरा थोड़ा तबले का मजा लीजिए। One, 2, 3, 4, and 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. मजा लीजिए।
So this was a very short glimpse of a tabla solo जिसमें पेशकार कायदा था. रेला मैं अब बजाऊंगा लेकिन द्रुत तीन ताल में, थोड़ा टेम्पो बढ़ाते हैं. तो उसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धा दिन दिन ना ना तरकते ना तरक दिन दिन ना धा दिन ना दिन ना तरकते ना तरक दिन ना धा. अच्छा, बॉल की तिहाई पहले खेल लेते हैं. ओके, ये बॉल है, मैं बाउंस कर रहा हूं. ये कैच कर रहा है आपको. कैच. देखिए, तक 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 देखे 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 दादा धा तक 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 देखे 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 दादा धा तक 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 देखे 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 दादा धा. अब ये मैं बजा के दिखाता हूँ. धा धा थोड़ी भाई स्पीड बढ़ा. तक 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 देखे 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 दादा धा तक 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 देखे 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 दादा. कैच तक 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 देखे 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 दादा. कैच तक 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 देखे 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 दादा. कैच तक 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 देखे 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 दादा. कैच तक 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 देखे 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 दादा. देखे 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 कैच. आपने तोप देखी है? कैनन. कैनन पहले के टाइम में कैनन होता था ना, दो बड़े व्हील्स होते थे और एक तोप होती थी, उसमें आग लगाते थे और फिर गोला बम फूटता था, है ना. तो आपको उसकी कॉम्पोजिशंस आपको सुनाते हैं. तोप परन नाना दिन दिन नाना तक ना तक दिन दिन नाधा करते नाना दिन दिन नाना दिन दिन ना तक दिन दिन नाधा. अरे ना, देखिए व्हील्स क्या है. धीरे 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 करते धीरे 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 करते धीरे 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 करते धीरे करते धीरे करते धीरे धीरे करे धीरे धीरे नगे धीरे करते करते नगे धीरे करता करता. ये इसकी शेप है. देखिए वापस धीरे 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 करते धीरे 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 करते धीरे करते धीरे करते धीरे करते धीरे धीरे नगे धीरे करते करते नगे धीरे करता करता कहते धीरे धीरे करते त्राण धारी का दा धीरे धीरे त्राण धारी का धा धीरे धीरे त्राण धारी का धा. तो इसको तोप परन कहा जाता है. देखिए नाना दिन दिन नाधा. धीरे धीरे धागे धीरे करते धीरे धागे धीरे करते धीरे करते धीरे करते धीरे धागे धीरे करते धीरे धीरे नागे धीरे करते करते नागे धीरे करते धीरे करते गिनत्रान धाधी का तधा धीरे करते गिनत्रान धाधी का तधा धीरे करते गिनत्रान धाधी का तधा.
इसका वॉल्यूम बढ़ेगा भैया। Heartbeats. मेरे साथ एक जुगलबंदी करेंगे? ओके, अब देखिए जो मैं क्लिक पे जो पैटर्न दूंगा वो आपको तालियों में बजाना है, ठीक है? करते हैं, ट्राई करते हैं। ओके देखिए, अभी दो। डबल। Thank you so much. So this was a short glimpse of my percussion tabla hybrid setup. I hope you guys enjoyed. Okay,
आपको एक पहले पानी पीता हूं फिर एक साउंड सुनाता हूं. पानी इज आई एम अ स्ट्रांग बॉय. इट्स ओके. I got it. I'm a strong man. Don't worry. कोई बात नहीं भाई, जरूरी नहीं. सो जो एक जरूरी आवाज जो मैं आपको सुनानी भूल गया था वो थी वाटर ड्रॉपलेट साउंड. सैमसंग फोन्स तो काफी लोग सब यूज करते हैं, ऐसे एप्पल वाले ज्यादा है आजकल. ये फिर भी देखिए, रिमाइंड्स यू ऑफ समथिंग. एंड फेसबुक लाइक, राइट. एंड जब मग्गे में पानी धीरे धीरे भरता है, या जब टेम्पल रन में आप पॉइंट, टेम्पल रन खेला किसी ने? परफेक्ट. तो जब कॉइन्स कलेक्ट करते हैं तो देखो कैसे साउंड आती है. राइट. और मग्गे में जब पानी भरता है कैसे धीरे धीरे भरता है, देखो. अब ओवरफ्लो हो रहा है. So this was a short glimpse of my vocal percussion. Thank you so much for today's session. I think we're done for today. This one's done, right? Thank you so much for having me. Thank you so much, guys. Namaskar. Ball? Superb. Thank you. Love you. Pranshu, I have to tell you, I've never seen my students this happy and this excited. We've had many sessions, but children, I told you I'm going to come back to my question. Is classical music boring? Did you enjoy it? How many of you would want to now learn to play tabla? Do you know Prabhat sir also teaches how to play tabla? Okay, now get after his life if you want to learn how to play tabla. Pranshu, I'm falling short of words today. It was fabulous. It was really amazing. Thank you, Shruti, to make it happen. I'm sorry, sir, मेरे को आपका नाम नहीं पता. It was beautiful. Beautiful. I mean, it was so melodious. I'm so sorry about that. सारंगी के पे सारंगी बहुत ही एक तो खूबसूरत साज है, बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट है, एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इंस्ट्रूमेंट टू प्ले. जरा एक बार आप दिखाइए जरा सबको, ये बहुत जरूरी बात है बताना. This musical instrument, it's called sarangi. इट्स कॉल्ड सारंगी एंड एक सिंगल पीस ऑफ वुड का है, तो इसको काट के बनाया जाता है. इसमें कोई जॉइनिंग नहीं है, राइट. एंड इसका जो बो है जिससे वो बजा रहे थे, उसका जो थ्रेड्स हैं वो हॉर्स के टेल के बाल होते हैं. ओके, तो इन सब चीजों को सब मिला के वो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, एंड वो भी नेल्स के क्यूटिकल्स से, विच इज वेरी पेनफुल. सो मिस्टर आरिश फैजल ऑन सारंगी, थैंक यू सो मच. Thank you. Thank you. Pranshu, I'm sure this session is going to stay with them for long. I'm hoping many of them will now get into learning how to play tabla. I would want to, and I think there is no age as too late, and I can begin now as well. So, thank you, students. Thank you, Pranshu. Thank you, Shruti. Thank you. It was amazing. I request Mr. Sharma, Ms. Rashma, to come up on the stage. We just have a token of gratitude, a small token of thank you. We would also like to felicitate Pranshu on the stage. We would begin with that Ragini. Shruti, I'm a permanent guest on all Delhi shows. You know that, right? Shruti, please come up on the stage. Please, please, please come up.
remembers the name of the instrument he played? He played sarangi. Now you know what sarangi is, right? It is made up of. How did it sound to your ears? Good. Shruti, I would now like to invite you on the stage, please. Thank you, Shruti. It's so nice to have you as a part of the Prometheus family. Do you know why and how we got Pranshu to come here? Because of Shruti ji. Shruti's son Ardas is studying in our school, and we had the pleasure, Miss Anisha and I had the pleasure of attending late Chatur Lal ji's birth anniversary. Uh, I think it was 90 some birth anniversary of Pandit Chatur Lal. 96th birth anniversary. And that's where we saw Pranshu's performance. And Miss Anisha and I were amazed to see it. We were sitting in the front row. And we were like, we need to get him to Prometheus. And Shruti, thank you so much for making it happen. Pranshu, you were amazing. And those of you who want to become a tabla player, you will have an opportunity to meet with who? Who did you like the most in all the pictures? Awesome, Pranshu, you're the star. Shah Rukh Khan, Shah Rukh Khan. अच्छा नहीं तो बोला Pranshu. Pranshu. Awesome. So Pranshu is a big star, no? All right. He made you all attracted to tabla, made you all love tabla, right? It's an art and it requires significant practice. He started at the age of 3. Imagine how much practice would have gone into what he is today. If you want to become a tabla player, reach out to Prabhat sir and become one. Thank you, Ji. Would like to request her to share guidance and motivation with all the budding musicians present here. I would like to invite upon Ms. Shruti Chatur Lal. May I please request you to come up on the stage and bless us with your presence, knowledge, and expertise. Thank you.
So I heard and I saw that many of you like music. And I feel privileged that I'm born in a family of a legacy. That tabla tradition is known after my grandfather, Pandit Chatur Lal ji. So I just have a quick presentation to give you just glimpse about Pandit Chatur Lal, who he was, how he initiated his journey, and how he made a mark all across the world. And then we will invite his grandson, my brother, Pranshu Chatur Lal. Okay. So let me just take a quick view. So the first slide that you just saw the picture, that was from the book Eternal India, that was presented and printed by the first Indian women Prime Minister, Indira Gandhi. Okay, so she had written and published a book, and the cover photo of that picture was of my grandfather. Now, Pandit Chatur Lal was the first Indian percussion. So as we now have the iPods, during the 1950s, we used to have LP records. So these LP records were like round ones, which used to be played on a player. It had a special player. So the first LP to be introduced in the world of music all across the world was of my grandfather, Pandit Chatur Lal. Then you should all check out, there is one film called A Cherry Tale. Have you heard of Oscar awards? Yes? And where they belong from? Which country? US? Yeah? Similarly, in Canada, we have BAFTA awards. So my grandfather was the first Indian percussionist to get an awarded with an Oscar nomination and a BAFTA award winner he was in 1957 for this movie called A Cherry Tale. It's a very beautiful motivational story of a man and a chair where there are no dialects, but they are speaking through music. They're showing their anger, they're showing that, how much they want for each other, but also the story is about negotiation skills. It says that negotiation is not always bad, but there can be a win-win situation, respecting each other and putting each other in each other's shoe so that you can understand each other's thoughts, which is very important when you respect each other. Yes or no? Yes? So you should go back home and check this movie called A Cherry Tale. And for this music category, they won Pandit Ravi Shankar and Pandit Chatur Lal, who is an acclaimed sitar maestro, I'm sure you must have heard of. They won the Oscar nomination and BAFTA award. The next is, as he gave film music for Canadian film, it was also German films, French films, and different Spanish films which he gave music for. And so, unfortunately, in 1965, when he was just 39 years old, he was the peak of his glory. He was known everywhere, okay? But unfortunately, he expired. He died in 1965 when he was just 39 years old. So as an honor, because he was the first Indian percussionist to introduce Indian classical music in the US, the American Embassy in Delhi, in India, started with Pandit Chatur Lal Excellence Award, giving him an honor. And it was given to all the big musicians from all across US and India. So I just thought of mentioning that as well. And now, we can have the next slide. Okay, this is a very special picture for us. So this picture says that it is the first Indian American fusion concert, the first ever fusion concert in the history of world music. So in 1957, my grandfather went to the US for the first time, taking Indian music, and there they thought that there has to be a fusion of the drums. So there was an American TV producer. He thought that, okay, we have the god of drums from India, Pandit Chatur Lal, and in US we have our god of drums whose name was Papa George Jones. So why not to do a duet? Why don't we do a jugalbandi with them? So they curated just a 13-minute film which was presented in the television all across the US, and this was the picture which was taken then in 1957. And this was filmed, and today we can see this film of 13 minutes in two places.
One is the Library of Congress in Washington, D.C., and the second is Pandit Chatur Lal Museum, Tadha in Delhi. So this is a very, very, very special picture for us. The third one. Can you recognize who is the person in the middle in the first photograph? And who is he? Yes, Jawaharlal Nehru ji. So this story goes back in 1960. When my grandfather was performing in London, Queen Elizabeth was invited. But I think she was unwell and she couldn't attend. So when she came to India in 1962, she said, I want to meet this man whose name is Pandit Chatur Lal. He has created a huge name in my country and people loves him and adores him. And he's so special to my people that I want to go and meet him. So Jawaharlal Nehru ji said, okay, I will arrange a concert for you and then you meet him. So the next picture is of Queen Elizabeth II, the second, and the Duke of Edinburgh, her husband. And that's my grandfather when they met after the concert. So this was in 1962. Okay. Our next, the first right picture, who all knows Mr. K.R. Narayanan? GK? Yes. Okay, so he was the former president of India. Okay, a few years back, he was the former president of India. And then in 1960, he was the Indian ambassador to Australia. So when he heard of Pandit Chatur Lal, he said that he wanted to invite the lady sitting in the middle she's known as the Queen of Sarod, Sharan Rani. So he invited Sharan Rani and Pandit Chatur Lal to Australia, introducing Indian classical music in Australia, being the Indian ambassador. So this photograph comes from there. And who all knows Lata Mangeshkar? Who all loves the melodious voice of Lata Mangeshkar? Yeah. So this photograph goes back when they all were producing music for Bollywood films. So they have done music for a lot of Bollywood films in 1950s to 1965. And this picture goes then. So if I just tell you, on the left extreme, we have Ustad Ali Akbar Khan. He was the doyen of Sarod. He introduced Sarod in the West with my grandfather. They both together went to the US in 1955. In the center, we have Lata Mangeshkar, of course. The top right is my grandfather. And the below right is Pandit Ravi Shankar ji. Okay, so this is what the legacy that me and Pranshu comes from, for which we are truly blessed. Next slide, please. Okay, so this was one of the, which is the biggest concert you have seen till date? It can be of any musician, any rock musician or classical musician. Yeah? Quickly tell me. Okay, great. What else? Who else? Arijit Singh, okay. Okay, great. So that time, this kind of concert used to happen of 3 people together. They used to call the doyen of Indian classical music. It used to be Pandit Ravi Shankar, Ustad Ali Akbar Khan, and Pandit Chatur Lal. And this had an audience of 25,000 people. So it was like the Eminem or Arijit Singh of that time. Okay. So next slide. We can just take the pictures. Okay. So I just told you that we have a museum of my grandfather, and the road coming to the museum by the government of India has been named after him as Pandit Chatur Lal Road, which is in South Extension, next to Defence Colony or Horse Khas, Ames. It's near that by area. So on his 85th birth anniversary, the government of India, as a honor to him, decided to name the lane after his name. Next slide. Okay, that's a glimpse of the museum. Next slide. Yeah. So the legacy continues and continues, and now it's my brother, Pranshu Chatur Lal, who's carrying his name, his tradition all across the world. Pranshu started his journey when he was just 3 years old. So when, as you all used to play some games when you were kids, the younger ones.
So me and my brother we used to play games in our own language, in the language of rhythms. So that is how our life used to be when we used to get summer holidays. In the morning, our whole thing used to be like in the morning, get up at 5 till 8, you practice tabla. From 9 to 10, you have your breakfast. Then a bit of rest for an hour. Then again, 11:30 to 1:30, you practice. 1:30, you have a lunch. Rest for some time. Then again, 5 to 8, you practice. So we used to be like, oh God, summer holidays should not come because we were so tiny, we didn't wanted to do music all the time. But now we realize that how much hard work we put in when we grow older and we take it as a profession, how much it helps us. So we should always listen and obey what our teachers, what our parents should say because they are telling for our good. And now we realize that how much it's paying to us. Okay. So that's him, Pranshu Chatur Lal. And that's his photograph with Pandit Ravi Shankar ji, the Bharat Ratna, who's the acclaimed sitar maestro, the sitar doyen. And if you have heard of Anushka Shankar, the sitar player, she's his daughter. That's of the picture that Pranshu performed for our Honorable Prime Minister of India, Honorable Prime Minister Modi ji. That's Ustad Zakir Hussain, the doyen of tabla. That's Shah Rukh Khan when Pranshu did. So Pranshu does a lot of foreign collaborations like with Spanish bands, Polish bands, American bands, German, French. So one of this was with the Korean bands. And he also performed Korean drums. So this was when he performed for Shah Rukh Khan. And this is the picture from then. And that's Ustad Amjad Ali Khan Sahab, the renowned Sarod maestro. So that's a bit about him. And today he will be accompanied on Sarangi, which is an ancient instrument by Arish Faisal. And without any further delay, because we have time constraint, I'll invite on stage. Please put your hands together for Pranshu Chatur Lal. Pranshu, I must mention, there are a lot of kids here who love music and they want to see their career in music. So Principal Ma'am specially told me to mention you this so that you can interact more with them and see where they are and how they can enhance their skills. I'll just take few seconds to set my things up. So, kindly allow me a moment. इसका थोड़ा सा भी है थोड़ा सा इसमें गेन दीजिए प्लीज थोड़ा हाई दीजिए और हाई दीजिए नाइस इसका वॉल्यूम अप करिए प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है पीछे वाले बढ़ेगा थोड़ा बढ़ेगा भाई अब ये वाला वॉल्यूम किक वॉल्यूम थोड़ा और बेसिक करिए इसे किक की तरह थोड़ा लो इसको थोड़ा टाइट करिए शार्प करिए बेस एकदम कट कर दीजिए इसमें से हाइस बढ़ाइए दादा थैंक यू मेन चीज तो भूल गया वॉल्यूम ये बात है फैंटास्टिक सारंगी चेक करिए
थोड़ा सा बूम आ रहा है, उसे थोड़ा कम कर सकते हैं। एंड थोड़ा इसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए, इसकी वजह से बूम है। इसमें रिवर्ब है या गेन है, इसे कम करिए, है ना, इससे बूम आ रहा है। थैंक्स। या व्हाट? That's not what, it's water droplet. Okay. Namaskar, everybody. Namaskar. So, I'm Pranshu Chatur Lal, and I'm here to talk about music, and especially about sounds. Okay? तो sound को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पता है? नहीं, ये तो ध्वनि. That's a very good one. पर नाद was the first word. Okay? नाद. और पता है नाद कब आया था? तो जब महादेव ने जब डमरू बजाया था, डिग 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 डिग, तब नाद का शुरुआत हुई थी। ठीक है? और 14 शिव सूत्र भी हैं जो 16 बीट्स में गठित हैं, वो भी, और उन्हीं 14 शिव सूत्रों से हमारी सारी लैंग्वेजेस बनी हैं। यू कैन गूगल इट। ओके? तो जो हमारा तबला है, आप देख रहे हैं बहुत सारे साज हैं मेरे पास। पहले तबले की बात करते हैं। आपने देखा था ना अभी एक फोटो के अंदर, आपने देखा होगा एक स्लाइड में, जिसमें मेरे ग्रैंडफादर ने एक वर्ल्ड फ्यूजन किया था। तो उसी को सोच के, क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं बहुत ज़्यादा हमारे म्यूजिकल लैंग्वेज में। ये एक म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है जो जर्मन, फ्रेंच और इन सब से हटके है, वो हम सब के लिए सेम है। ठीक है? और सबसे पहली हमारी बीट कौन सी होती है? हार्ट बीट, जो हमारे अंदर है। तो आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि आपको म्यूजिक आता ही नहीं है ना? तो बीट्स तो सबको समझ में आती हैं। अब हम बात करते हैं तबला इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में कब और कैसे आया। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक जब शुरुआत हुई थी, तब जो हमारे गॉड्स जो परफॉर्म करते थे, कथक होता था, गायन होता था, वीणा प्ले करती थी सरस्वती माँ, है ना? तो वो सब ध्रुपद अंग में होता था। ध्रुपद एक स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कह सकते हैं। करेक्ट भाई? 13th सेंचुरी के बाद ख्याल गायकी शुरू हुई, जिसके लिए, और ध्रुपद के साथ पखावज बजता था, जो लॉर्ड गणेश जी प्ले किया करते थे। आपने देखा होगा ना, काफी फोटोज में ऐसे होगा, इस टाइप का एक है इंस्ट्रूमेंट, है ना? पखावज कहते हैं उसको, साउथ में उसको मृदंगम भी कहते हैं। तो वो था पहले। और तबला 13th सेंचुरी के बाद ख्याल गायकी के साथ, क्योंकि वो ख्याल जो गायकी थी वो थोड़ा लाइट वर्जन ऑफ पिच का था, इसलिए उसके साथ पखावज सूटेबल नहीं था, परकशन। तो इसलिए तबले को बनाया गया। सो दैट्स हाउ तबला वाज बॉर्न। ठीक है? ये तो गई हिस्ट्री। अभी एक जरूरी चीज, लोग इसको क्वीन ऑफ ड्रम्स कहते हैं, बट आई कॉल इट एज अ कपल ड्रम। व्हाई? बिकॉज एक तो दो हैं ऑब्वियसली, है ना? और आई होप दैट्स नॉट माय फोन। या सो कपल ड्रम, व्हाई? बिकॉज दो हैं और एक फीमेल है, एक मेल है। अब आप बताइए कौन सा फीमेल है, कौन सा मेल है? ओके? एक तो ये है, कौन बताएगा? कोई एक? एनीबडी? या ऑब्वियसली, राइट। करेक्ट। या दैट वाज अ वंडरफुल आंसर। प्लीज क्लैप फॉर हिम। एग्जैक्टली, मैं भी यही बोलने वाला था। पिच का फर्क है ना? इसमें ट्राइबल साउंड है और इसमें बेस साउंड है ना? अब जैसे कि मैंने बताया कि लैंग्वेज होती है हमारी, ड्रमर्स की अलग लैंग्वेज होती है जो ड्रम्स बजाते हैं, रिदम सब सेम है। ठीक है? थोड़ा थोड़ा सा लैंग्वेज में अलग है। लाइक दरबूका है, दिस कम्स फ्रॉम टर्की, ओके, एंड द वन आई एम सिटिंग ऑन कम्स फ्रॉम स्पेन। ऑलराइट? तो इसकी लैंग्वेज है धुम कफ कफ धुम कफ, राइट? तो जैसा मैं बोलूंगा वैसा साउंड करेगा ड्रम, ऐसा होना ही चाहिए, वरना कुछ गड़बड़ है। ओके? तो देखिए, अब मैं आपको राइट हैंड ड्रम, जिसको दाया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंड इसका जो स्किन है, ये पता है कौन सा
कौन सा एनिमल का है लेदर? गैस कर सकता है कोई? नहीं यार, तो बहुत मोटी हो जाएगी, उसमें से आवाज कैसे आएगी? सोच के बोलो। स्नेक होता है, ऑफ कोर्स होता है। लिजर्ड स्किन भी एक इंस्ट्रूमेंट में होता है। लिजर्ड स्किन यूज होता है। ओके ओके, सो इट इज गोट, ठीक है, बकरी, फ्रॉम द स्टमक पार्ट, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। एंड ये जो है ब्लैक स्पॉट बीच में, ये चारकोल और ग्लू एंड व्हाट यू क्या बोलते हैं यार, आयरन पाउडर, ये तीन चीजों को मिक्स करके ये ब्लैक स्पॉट बनता है, जिससे साउंड में वेरिएशन आती है, वरना ये सिर्फ ऐसा ही साउंड करता। अब मैं आपको इसमें डिफरेंट साउंड सुनाता हूं इसकी लैंग्वेज के साथ, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। ता, तीटा, त्रक, तिन, तिरकिटा, राइट, लेफ्ट हैंड कत, घे, गे 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 गे, राइट। अच्छा, कमाल की बात क्या है, इससे मैं डिफरेंट डिफरेंट ट्यून्स भी निकाल सकता हूं, जो मेरे दादाजी ने इस चीज की शुरुआत करी थी। इससे पहले ऐसा होता नहीं था तबले में। तो एक बेस लाइन सुनाता हूं आपको। बेस लाइन को यहाँ पे बेस गिटार बजाता है, परफेक्ट। सो एक बेस लाइन बॉलीवुड सॉन्ग की है, ट्राई करता हूं, पता निकलेगा कि नहीं। देखो कौन सा सॉन्ग है। कौन सा सॉन्ग है? परफेक्ट, लवली। तो अभी मैं आरिश भैया को बोलूंगा, जरा हम लोग एक कन्वर्सेशन करते हैं आपस में। लोग कहते हैं कि रिदम और जो है मेलोडी है उसका कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है ज्यादा ठीक से। ऐसा हम अभी सब लोग को रॉन्ग प्रूफ कर देते हैं भाई, ठीक है। तो आप कुछ तान कहिए, मैं ट्राई करूंगा जवाब देने की। सो वील हैव अ गुड क्विक कन्वर्सेशन। समथिंग लाइक दैट। तो ये हम लोग ऐसी कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अब मैं जरा भाई को कुछ देता हूं, अब जरा ये जवाब देंगे। तो मैं कुछ आपको रिदम देता हूं। ये बात तो इस तरह से हम लोग कन्वर्सेशंस कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रेडिशनल तबला के बारे में। मैं पहले सोलो के बारे में बाद में बताता हूं, पहले स्कूल्स ऑफ तबला के बारे में बताता हूं, डिफरेंट स्टाइल ऑफ तबला प्लेइंग। तबला के अंदर पहले तो एक ही था घराना, जो था दिल्ली घराना, दिल्ली स्कूल ऑफ तबला प्लेइंग। उससे बहुत कई घराने निकले, अब 6 घराने हैं, ठीक है। दिल्ली है, फरुखाबाद है, और उसके बाद क्या नाम है, अजराड़ा है, लखनऊ है, पंजाब है, ऐसे कुछ घराने हैं अलग अलग। इसमें फर्क क्या है, दिल्ली के अंदर स्पेशली सिर्फ 2 फिंगर से काम होता है। देखिए मैं तबले के अंदर वैसे ये तीनों फिंगर इस्तेमाल करता हूं, बट इफ आई एम प्लेइंग दिल्ली घराना तो मैं सिर्फ 2 ही अलाउड है। और अगर मैं पंजाब बजा रहा हूं तो मैं पूरा हाथ ऐसे इस्तेमाल करूंगा, लखनऊ कर रहा हूं तो 3 फिंगर। तो छोटी छोटी कुछ कुछ इंट्रिकेसीज हैं जिससे घराने बदल जाते हैं। अब आते हैं जरा टाइम सिग्नेचर के ऊपर। तो जो मैं आप लोग के लिए तबला सोलो आज बजाने वाला हूं, उसका ग्राफ भी मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या होगा उसमें। 16 बीट्स साइकिल किसी ने सीखा है क्लासिकल म्यूजिक में? क्या बोलते हैं उसे? 3 ताल, फैंटास्टिक। तो जरा मैं 3 ताल में आपको एक शॉर्ट तबला सोलो सुनाता हूं पहले, ट्रेडिशनल वे में, पर पहले से काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है। ऑलराइट गर्ल्स, विद मी, चलिए काउंट करते हैं साथ में।
सो देखना मैं कैसे क्लैप करता हूं, वैसे मैं पहले एक बार करूंगा, सेकेंड टाइम में आप ज्वाइन कर लेना. ओके, वॉच केयरफुली प्लीज. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 and 1. Start. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Language. Dha, dhin, dhin, dha, dha, dhin, dhin, dha, dha, tin, tin, ta, ta, dhin, dhin, dha and dha. तो ये जो साइकिल जो है पूरा, ये 16 बीट्स का है. सो द गेम इज कि मैं इसमें इम्प्रोवाइजेशन करूंगा. और तबला सोलो का ग्राफ क्या है मेरा, जैसे हम लोग पहले ऑफ कोर्स प्राइमरी स्कूल में पहले हम लोग प्लस माइनस सीखते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, डिवीजन सीखते हैं, उसके बाद स्क्वायर रूट, काफी कुछ चीजें आ जाती है, राइट. ऐसे हम लोग का भी एक सिलेबस होता है जिसमें मैं आपको बहुत शॉर्ट करके समझा रहा हूं, सुना रहा हूं. पेशकार थोड़ा स्लो बोल होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइम सिग्नेचर्स हम लोग दिखा सकते हैं, जिसमें धीरे धीरे स्पीड अप होते होते कायदा आता है, उसके बाद रेला आता है. सो पेशकार साउंड्स लाइक धी कृधिन धा धा घेना धा तित धा धा तू ना धा तित धा तू ना धा त्रक धा तित धा तू ना. समथिंग लाइक दिस. कायदा sounds like dhatit dhatit dhadatit dhage dinna kinna tatit tatit dhadatit dhage dinna kinna. इसमें कट्स होते हैं और जो रेला होता है वो फ्लोई बोल्स होते हैं, लाइक इस तरह से. ठीक है, तो ये जो मैं अभी आपको एक तबला सोलो सुनाऊंगा, इसमें ये तीनों चीजें होंगी. और फिर कुछ छोटे छोटे कॉम्पोजिशंस होते हैं, उनको टुकड़ा परन और कुछ कुछ चीजें होती है, वो मैं आपको एक शॉर्ट ग्लिम्स में अपने परकशन हाइब्रिड सेटअप की भी दूंगा. ठीक है, सो आई एम स्टार्टिंग ऑफ विद तबला सोलो इन 3 ताल. ओके, थैंक यू सो मच. Three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 and dha. Dhin, dha, dha, trak dhin, dha, dha, dhage, tin, trakatin, ta, titakit, ta, titakit, dhin.
थैंक यू सो मच। अब थोड़ा सा बढ़ाते हैं और फिर मैं आपको एक रेला सुनाता हूँ, बड़ा सुंदर सा, मेरा फेवरेट है। आइए खान साहब। थैंक यू सो मच। लेफ्ट वालों को तो पसंद आ रहा है, राइट वालों को शायद पसंद नहीं आ रहा है, वहां साउंड नहीं पहुंच रही है क्या? थैंक यू। थैंक यू सो मच, रियली मींस अ लॉट। चलिए, सैमसंग का फोन कौन कौन यूज करता है? अरे मेरे पास तो है, सिर्फ एमआई है यार, कोई बात नहीं, किसी वजह से बता रहा था। सुनिए एक चीज सुनाता हूँ। सैमसंग टच याद आया? अच्छा, फेसबुक तो सभी यूज करते हैं, इंस्टाग्राम हुए हो क्या? अच्छा, ढूंढ लेना मुझे इंस्टाग्राम पे। देखिए फेसबुक लाइक, एंड हैव यू प्लेड टेम्पल रन? तो जब कॉइन्स कलेक्ट करते हैं तो देखिए कैसे आवाज आती है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए इसका, तभी आएगी। पर वो म्यूजिक मैंने नहीं दिया है, मैंने उनसे कॉपी किया है, ठीक है? अच्छा, मग्गे में पानी तो सभी भरते हैं, है ना? उसकी भी आवाज ऐसी कुछ है, सुनिए जरा ध्यान से। अब ओवरफ्लो हो रहा है। Alright, so now I'll be playing a few pieces in Drut Teen Tal, again some of my tabla, and then last में drums का, ठीक है? That ball game. अच्छा, बॉल गेम खेलेंगे मेरे साथ? चलिए। तो एक तिहाई है, पहले समझना पड़ेगा तिहाई होती क्या है। So it's a composition which has 3 lines, okay? So like तेरे का दगा देगे न धा, तेरे का दगा देगे न धा, तेरे का दगा देगे न धा। This is a तिहाई. It can be longer, it can be shorter. ठीक है? तो अब इस तिहाई के अंदर इसको बोलते हैं बॉल तिहाई। कैसे? देखिए इसमें थ्रो का फील है। तक 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 देगे 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 देग खेल रहे हैं। तक 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 देगे 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 तक देगे ता धा धा तक 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 देगे 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 तक देगे ता धा 1 2 3 4 5 6 7 धा तक 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 देगे 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 तक देगे ता धा 1 2 3 4 5 6 7 कैच। ठीक है? तो ये 3 में है, और देखिए 3 ताल में भाई साहब धा दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना दिन दिन ना धा दिन ना। देखिए 1 2 3 4 ये चल रहा है साइकिल, ठीक है?
तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा धा तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा 1 2 3 4 5 6 7 धा तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा देख 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 कैच। तो ये कैच आपको पकड़ना है लास्ट में, ठीक है? कैच साथ में बोलना है मेरे, ठीक है? ओके। तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा कैच। तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा 1 2 3 4 5 6 7 कैच। तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा कैच। 7 के बाद है, एक बार करते हैं, एक बार मैं वापस पढ़ता हूँ फिर उसको जरा अच्छे से करते हैं, करेंगे वापस। तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा 1 2 3 4 5 6 7 कैच। तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा 1 2 3 4 5 6 7 कैच। तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा 1 2 3 4 5 6 7 शाबाश। दिन नारा कहते नार अब समझ गए? दिन नारा कहते ना तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा 1 2 3 4 5 कैच। तक 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 देख 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 तागिट देख ता धा 1 2 3 4 कैच। फैंटास्टिक, लवली। गॉट 5। अच्छा, एक सुस्त चुस्त, अभी आप सुस्त ना होइए वरना आपको एक सुस्त और चुस्त वाली तिहाई सुनाते हैं। एक दोस्त है वो बड़ा लेजी है, अरे यार स्कूल का टाइम कब खत्म होगा। एक है अरे यार नेक्स्ट पीरियड में क्या होने वाला है, जरा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? जरा दो टाइप के दोस्त, जरा देखिए, ध्यान दीजिए प्लीज। बोर तो नहीं हो रहे हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, नहीं हो रहे ना? चलो ठीक है, सुनिए। सुस्त और चुस्त। धा कहते नाना देंदे नाना कहते ना तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग तक देंदे ना देंदे ना कहते ना देंदे नाना दे टेड़ी धा कहते नाना देंदे नाना आइए तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथुंगा देग ता देग धा धागे न थई तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथु देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथु देग तक ता देग धा धागे न धा। तो एक स्लो है एक फास्ट है। धा दे नाना दे नाना दे नार दे तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथु देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथु देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न थई तक देग ताथुंगा देग तक ता देग धा धागे न धा।
you so much. Now comes a small drum solo for all of you. Just 1 minute. वो सुनाना जरूरी है वरना बच्चे डांटेंगे. धक 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 धक. एक जुगलबंदी कर लीजिए मेरे साथ. तो मैं जो भी बजाऊंगा आपको क्लैप्स में मुझको जवाब देना है, ठीक है? देखिए कैसे. छोटा. Single. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for having me here. It was completely a pleasure to perform for all of you. Thank you so much, guys. What a Thank you so performance. much, sir. We all really enjoyed it. Thank you for sparing your time and enlightening us with your music. Thank you. Thank you so much. I think we can have another round of applause. How many of you want to learn how to play the tabla? All right. So I hope you remembered. I was counting the hours when you were saying. So it was 9 hours of practice each day during the summer break. So that is the kind of dedication that you need. I know that we are very short of time. So can I request you all to quickly go back to your classes, pick up your bag and move for the dispersal. Thank you so much. Hurry up. The buses will not